ऑडियंस की ब्लेसिंग है जो उनको एक्शन प्रिंस हमेशा बना के रखेगी एंड आई विश हिम the best mass heroes of Kannada industry, and I can't wait to work with all of them, especially D Boss, you know. Rakkama song. I know, and I think I was traveling at that time and I saw the poster of Jacqueline, and that itself looked so fancy and attractive, and I'm like, damn, it's so good. मार्टिन के प्रमोशंस के लिए मैं यहाँ पर आई नहीं थी, तब तक मुझे आइडिया नहीं था कि इतने सारे फैंस मेरे भी यहाँ पर हैं और जैसे आपका नाम है अन्वेशी जैन, सब लोग गूगल करने लगे. okay. First show got me so much of fame and I was the most googled actress. Unfortunately, बहुत कम लोग होते हैं जिनको रिस्पॉन्स मिलता है ऑडियंस से, बिकॉज अगर ऑडियंस ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, I was always a fan of South films and I always watched dubbed films because they are ruling, and somewhere Bollywood can take some kind of inspiration in terms of making deep songs with good lyrics, you know. I know. I was there in that rally and फूल फेंक रहे थे, कई बार दूध चढ़ाते हैं उनके posters पे. But I think somewhere Kannada industry has set some really high standards in terms of storytelling, in terms of acting skills, in terms of larger than life. ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್, ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ವೇಷಿ ಜೈನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮೇಡಮ್ कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया. आप कैसे हैं? मार्टिन के फिल्म के जो पोस्टर निकलने के बाद आपका जो पोर्शन था, मतलब इस फिल्म में अन्वेशी जैन एक्ट कर रही है, एक बड़ा माहौल चल रहा था मतलब बेंगलुरु में. हाँ जी, बहुत खुशी हुई जान करके. मुझे एक्चुअली जब तक मैंने मार्टिन के प्रमोशंस के लिए मैं यहाँ पर आई नहीं थी, तब तक मुझे आइडिया नहीं था कि इतने सारे फैंस मेरे भी यहाँ पर हैं और इतने खुश हैं मुझे देखने के लिए कन्नड़ इंडस्ट्री में. एंड इट हैज़ बीन रियली वार्म वेलकमिंग फॉर मी. सो इट वाज सच अ प्लेजर टू सी सो मच लव कमिंग फ्रॉम बैंगलोर एंड एवरीबडी एल्स. स्पेशली एक सिनेमा के पोस्टर लॉन्च होने के बाद हम लोग देखते हैं मतलब इस सिनेमा में हीरो कौन है, हीरोइन कौन है. जैसे आपका नाम है अन्वेशी जैन, सब लोग गूगल करने लगे. Okay. Well, जानी जाती हूँ मैं इस चीज़ के लिए that I have been googled, right? So I came into pictures. So my first show got me so much of fame and I was the most googled actress. And I think किसी तरह से वो अभी भी कंटिन्यू अगर हो रहा है, जो लोग नहीं जानते अगर वो गूगल कर रहे हैं मुझे, तो आई थिंक क्यूरियोसिटी जब तक बनी रहती है तब तक हम बने रहते हैं, राइट. अटेंशन इज समथिंग दैट वी नीड टू बी इन द इंडस्ट्री, सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दैट. स्पेशली एक एक्ट्रेस को मतलब मेरा एक पहला कदम में भी मेरे को इतना रेस्पेक्ट मिल रहा है, इतना पॉपुलैरिटी मिल रहा है. क्या चल रहा है आपके दिमाग में अभी? एक बहुत ही लेजिट और करेक्ट तरीके का आई वुड से कि वैलिडेशन होता है किसी भी स्टार के लिए, किसी भी एक्टर के लिए जो जिसने शुरू किया हो. बिकॉज हम सभी जिस भी काम को शुरू करते हैं हमें लगता है कि हम उस काबिल हैं भी या नहीं. हालांकि हम सभी मेहनत करते हैं और सभी इक्वली उतना ही बनना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग होते हैं जिनको रिस्पॉन्स मिलता है ऑडियंस से. बिकॉज अगर ऑडियंस ने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो सब ठीक है, सब चंगा है, और नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलता कि वेयर यू वेंट रॉन्ग एंड व्हाट हैपेंड एंड व्हाई यू कुडंट मेक इट. तो मैं हमेशा इस बात को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर और ग्रेटफुल रहती हूँ कि जो भी मैं हूँ आज की डेट में वो सब आप लोगों की वजह से ही हूँ. जिस दिन आपका प्यार कम हुआ उस दिन शायद मेरा सपना भी वहाँ रुक जाए. तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड दैट इज़ वन थिंग दैट ड्राइव्स मी ऑल्सो टू वर्क हार्डर एंड हार्डर, यू नो. सो आई थिंक यू आर एवरीथिंग. स्पेशली बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स, मतलब वो चाहे हीरो हो या हीरोइन हो, वो सोचते रहते हैं मेरे को एक फिल्म चाहिए, आई हैव टू डू इन साउथ, स्पेशली इन कनाडा. आपको मिला है ना? एब्सोल्युटली. इनफैक्ट जब मुझे ये फिल्म ऑफर हुई तब तक मैंने ज़्यादा इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया था कि अपने करियर को किस तरह डायरेक्ट करना है. बट मुझे ये पता था कि मुझे क्या चीज़ें नहीं करनी है अपेरेंटली. सो व्हेन द फिल्म केम एंड व्हेन आई सॉ एंड हर्ड द स्टोरी, एट दैट टाइम ऑल्सो आई डिड नॉट रियली रियलाइज what big movie I have signed up for. Although I was always a fan of South films and I always watched dubbed films because they are ruling and their storylines. And in fact मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ पसंद है आप लोगों में वो है आपके गाने, सॉन्ग्स. इतनी ब्यूटीफुल मीनिंग के साथ में वो सॉन्ग मैं सुनती हूँ. और मुझे कोई भी गाना जैसे तेलुगु, तमिल या कन्नड़ में होता है तो मुझे एक तो उसकी जो लय होती है, जो मेलोडी होती है, वो इतना अट्रैक्ट करती है. बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ इनोसेंस इन मोस्ट ऑफ योर सॉन्ग्स, सम काइंड ऑफ classiness, and lyrics are out of the world always. So much of love and comparison with nature, the beautification of a lover, the way you compare it with ocean, rivers, sun, moon. It is amazing actually, and I think somewhere Bollywood can take some kind of inspiration in terms of making deep songs with good lyrics, you know.
एंड अभी 10 साल से जो माहौल चल रहा है कनाडा में, स्पेशली एक्शन प्रिंस ध्रुव सर्जा सर जी का, उनका बहुत बड़ा फैन फॉलोस है यहाँ पे। हाँ, correct. एक शो चल रहा था, मतलब एक रैली में कुछ लोग फूल फेंक रहे थे, कुछ लोग मैं थी उस रैली में। आई नो, आई वॉज देयर इन दैट रैली एंड फूल फेंक रहे थे, कई बार दूध चढ़ाते हैं उनके पोस्टर्स पे, एंड इट इज़ सच अ वंडरफुल फीलिंग टू सी द पर्सन दैट यू वर्किंग विद इज लव्ड एंड प्रेज्ड सो मच। आई थिंक ये ऑडियंस की ब्लेसिंग है जो उनको एक्शन प्रिंस हमेशा बना के रखेगी, एंड आई विश हिम द बेस्ट, यू नो। स्पेशली ध्रुव सर्जा, उनके साथ 3-4 नाम लाइक किचा सुदीप सर, डी बॉस दर्शन सर। Yes, absolutely. I mean, these are these superstars, mass heroes of Kannada industry, and I can't wait to work with all of them, especially D Boss. You know, such a not only he's a good-looking man, but the way he carry himself, the charisma in that man is out of the world. I mean, you will know when he's going to enter the room, right? I have seen his movie release, movie releases के जो press conferences होते हैं, I've seen his presence there. So on screen, though, it's like above and beyond. But when you see him interacting with fans, when you see him talking to people, the way he is, it is just so. It's a treat, you know, to watch him. स्पेशली इसके बारे में, मतलब जब सुदीप सर जी का एक फिल्म आया था विक्रांत रोना, जैकलिन फर्नांडिस, मतलब बॉम्बे में जो प्रेस मीट हो रहे थे ना, रक्कमा सॉन्ग वायरल हुआ था। I know, and I think I was traveling at that time and I saw the poster of Jacqueline, and that itself looked so fancy and attractive, and I'm like, damn, it's so good. And I think that came right after my song Na Peru Sisa, and in fact honestly मुझे लग रहा था कि यार अभी ये इतना वायरल हो रहा है, I hope it doesn't take over my song, you know, and in a way एक थोड़ा सा वो एक feeling आई थी, लेकिन I think it was beautiful when I saw it, that the way they have danced, and the Jacqueline has done fabulous job in that film, and I think it was such a good call to have her in the song, you know. प्रेस मीट शुरू होने के पहले से आप कुछ लोगों से बात कर रहे थे, मतलब मुझे केजीएफ फेवरेट है, मुझे दर्शन सर जी का क्रांति फेवरेट है, सुदीप सर का विक्रांत राणा फेवरेट है। बॉलीवुड के जो नज़र है ना कन्नड़ा फिल्म को देखने के लिए, मतलब वन ऑफ द पार्ट ऑफ बॉलीवुड, व्हाट आर द थिंग्स इन योर माइंड? Actually, somewhere we are trying to have that level of, I would say, there are superstars obviously in Bollywood, but the kind of love that audience give here, we are trying to have that kind of love from the audience there as well. And I think somewhere the inspiration to make, although Bollywood is a hub and the center of, somewhere, you know, we make films, and we do make good films. We have been making good films for a while, but I think somewhere Kannada industry has set some really high standards in terms of storytelling, in terms of acting skills, in terms of larger than life fighting scenes, larger than life stardom. I mean, you guys are there. I mean, I believe it's creating such an inspiration for us to even work harder and, you know, somehow get inspiration more and more from you guys. So it's wonderful to see. एंड फाइनल नोट, बॉलीवुड मिल के एंटायर वर्ल्ड में बात कर रहे हैं मार्टिन के बारे में, एक्शन के बारे में, स्पेशली उदय मेहता जी के बारे में, और एपी सर के बारे में, और एक्शन प्रिंस ध्रुव सर्जा के बारे में, इंक्लूडिंग आपके बारे में। Yes, and I think because the teaser and the views, I think speaks for itself. 89 million जो हमारे views हैं, it's coming from somewhere. Plus we have had some really trained fighters and action masters from here, from outside, and there are some really famous names that you might have seen in the teaser. I can't reveal much about them, but their presence in any of the Indian film, I think it has happened so rarely, which is making it a talking point about it. And plus, the action is to die for it. In fact, I enjoy doing action so much. The kind of stunts that I have done, the kind of fights and killing that I'm doing, honestly, I'm enjoying it so much. And I think the outfits, the look, the vibe, the attitude that I'm supposed to carry in the film, all of it is just so wonderful. I'm so happy that people are talking about it, and I want you to keep talking about it and see the movie first day, first show. All of you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. ಇದಿಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷ್ ಜೈನ್ ಅವ್ರ ಮಾತು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಕಿರಣ್ ಜೊತೆಗೆ ರವಿ, ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್.